आर प्ले टू ऑन गेम्स डेड इन 2022 जानेंगे आज के इस वीडियो में। और वीडियो में माइक को ऐसे पकड़ रखा हो बिकॉज देयर इज सम कंस्ट्रक्शन वर्क गोइंग ऑन, और अगर मैं इसको दूर रख के बात करूंगा यू विल हियर अ लॉट ऑफ नॉइज, तो इसीलिए वीडियो में माइक ऐसे ही रहने वाला है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। Okay, so first things first, Axie Infinity, Decentraland, Sandbox, all of these are massive play-to-earn platforms, alright? Now, why am I saying are these play-to-earn games already dead? एक काफ़ी शॉकिंग स्टेटिस्टिक्स है कि सैंडबॉक्स ने, जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्ले टू अर्न गेमिंग प्लेटफॉर्म्स है, उसने अपने लास्ट राउंड में $93 मिलियन रेज किए थे एंड द वैल्यूएशन वाज $4 बिलियन। नाउ इमेजिन कि एक $4 बिलियन यानी कि ऑलमोस्ट 32,000 करोड़ की कंपनी पैसे उठा रही है मार्केट से, एंड द एक्टिव यूजर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज जस्ट 12,000 अ डे। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। Decentraland, one of the most popular play to earn platforms, जहाँ पे अभी जो daily active users है, these numbers are of July by the way, that has fallen to 978. For comparison, Fortnite has around 30 million daily active users, Valorant has around 800k, and all of these are Web2 games, right? तो ये जो बड़े Web3 गेमिंग प्ले टू अर्न वाले प्लेटफॉर्म्स थे, क्यों इनका जो डेली एक्टिव मेंबर्स का पार्टिसिपेशन है वो फॉल हो रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। बट बिफोर दैट, टुडेज वीडियो हैज अ स्पॉन्सर विच इज bold.io, जिनके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। तो इन आवर लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन Web2 गेम एंड a Web3 गेम। Basically all these games like Sandbox and Decentraland have their own token, जिसको आप यूज़ करके इन गेम एसेट्स को बाई या सेल कर सकते हो। मोर ऑफन दैन नॉट वो एक फॉर्म ऑफ ओनरशिप देता है आपको ओवर दी प्रपोजल्स जो भी रेज होते हैं इन द गेम। एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट इज देयर जिसको बोलते हैं snapshot.org। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, लेट मी शो यू। So if you go on this website which is snapshot.org, यहाँ पे अगर आप जाते हो Decentraland पे, फॉर एग्जाम्पल इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बाय Decentraland, यहाँ पे आपको दिखेंगे एक्टिव प्रपोजल्स फॉर मल्टीपल थिंग्स दैट दे आर डूइंग, राइट? तो अगर आपके पास Decentraland के माना टोकन से, यू कैन एक्चुअली वोट ऑन दीज प्रपोजल्स। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट कि जो मेटावर्स का एंटायर कॉन्सेप्ट है, Axie Infinity, a $3 billion का गेम which was by far one of the most popular play to earn games last year, उसका जो मेन मार्केट था दैट वाज अराउंड इन फिलीपींस इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इन फिलीपींस पीपल वर एक्चुअली प्लेइंग दीज गेम्स लाइक Axie Infinity बिकॉज वहाँ पे जो लोगों का मिनिमम इनकम है दैट इज लेसर दैन दे कुड मेक बाई प्लेइंग थ्रू दिस गेम्स, ऑलराइट? तो यहाँ पे लोगों के लिए गेम्स खेलना एक्चुअली प्रॉफिटेबल था। बट राइट नाउ द मार्केट्स आर एक्चुअली करेक्टिंग फॉर दीज प्ले टू अर्न गेम्स, एंड इफ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन ट्राइंग आउट सम ऑफ दीज, आई विल से प्लीज गो अहेड एंड ट्राई इट, बट don't put all your money in the game, right? Experiment with it maybe if you have some spare cash, or kind of look around YouTube videos, listen to people what they are talking about these games, their experiences and all of that, and then you can decide whether you want to play it or not. And apart from that, if I talk about the utility of the in-game assets, I have already explained in governance proposals, you can vote, you can use these tokens to buy assets in the game, and there's actually a lot more use cases beyond this. Now the final verdict before wrapping up the entire thing, will these games survive? The answer as per me is yes, they will survive. It might take a year or two for people to actually transition to these games, maybe even longer. But the entire point of transferring ownership of the game to the community it's insane. People will hardly see this happening in the traditional game industry, right? तो Web3 games का जो market है, it will evolve. Corrections are obvious in any market that happens, but that's what I think about Web3 games more specifically. Now coming to today's sponsor of the video, it is bold.io. You can go to their website and check. It's a game that's currently being made, और अभी इसका जो है early access का waitlist on है. It's definitely a project that's aiming towards the mass adoption of play to earn games by serving both the audience who are casual gamers and those who are like core gamers from the industry. It has two tokens. One of them is Run, which is the utility token of the platform bold.io, and the BWLE token, which will be at the core of the entire ecosystem.
When someone buys in-game assets using their fiat currency, Bolt.io actually uses the money to buy an equivalent amount in BWLD tokens, which increases the price of the token. So it's not out yet, but this is what they have been saying in the roadmap. And the best part about Bolt.io is that you don't need to have knowledge about MetaMask, seed phrase, and all of that complex stuff. It's very easy, just like you log in using Google or Facebook accounts. You have an option to do that on Bolt.io. Also, those who are familiar with crypto can actually have accounts like Decentraland or Sandbox using their MetaMask wallets. So you have an option to either use your Google account for login or use your MetaMask account for login, which is amazing. Hopefully that makes some sense for you guys watching this video, and do let me know your thoughts about play to earn games in the comment section. See you guys in the next one. Till then, goodbye.